Okay, Vivek, let's start your full mock for CPCL, and Yes. you are from civil engineering background. Yes. Okay, introduce yourself first. My name is Vivek Kumar. I have my initial schooling of class 10 and 12 was from Patna. I had completed my Bachelor of Technology from NIT Patna from Civil Engineering in 2021. Currently, I am pursuing Master of Technology from IIT Delhi from Transportation Engineering. My hobbies is to news about the international relations, and my major project in B.Tech was design of stone column. Design of stone column. Acha, where we use this kind of design in marshy land, or what kind of land for which we prefer the design of stone column for soil stabilization? Uh, for design of stone column, we mainly use clay type soils. Clay type. Clay type soil. Uh, so I am not sure about this type, but I think that it was mainly used for clay side because in sand consolidation take place. Is the Okay. Uh, Vivek, you are civil engineer, and it is a basically a petroleum company. yes, yes. So, what do you think? It will be suitable for you, or it matlab just for the sake of job you are thinking of that? I think that civil engineering is helpful in many sectors, and so civil engineering is also useful in petroleum sectors because infrastructures are made in heavy sectors and infrastructures and new projects, maintenance of older infrastructures are also used in petroleum industries. So I think that it is not it is a good option to also work in CPCL, petroleum industry. Okay. Acha, can you tell me the five products CPCL basically produce? First is Waffin wax. Hmm. Second is petroleum products like petrol, and third diesel and LPG. And Hmm. it also started producing fuels for the hypersonic missiles. And in this year, CPCL also started producing oils for army purpose like jet oils. Get oil. Uh, Okay. Uh, Naphtha is a fuel, or it is some kind of um, uh, spirit? uh, I am not sure what, but I think that naphtha is just better. Okay. In lighter, what kind of fuel we use? Cigarette lighter and In lighter, mainly kerosene is used. okay. Okay, Vivek, one more question. Who is our petroleum minister? Hardeep Singh Puri. Hardeep Singh. Puri. What is the OPEC countries? OPEC countries are the group of countries, and in this the country like Saudi Arabia and mainly southeastern countries are there, and they held every meeting and they will decide the output of the petroleum products and Petroleum. then petroleum how many petroleum products
output will be from OPEC countries. Petroleum product or crude oil? Crude oil, sir, crude oil. Acha, what is the unit of crude oil in the international market? Sorry, sir, I'm not able to give all. Have you not heard about the barrel? Yes, it's a BAL. BAL is a mainly used term. Okay. Okay, so Vivek, uh, generally in the township of these kind of refineries, there is a sewerage system, ठीक है ना? For which has to be treated through STP. Yes, sir. STP. तो STP के norms जो होते हैं, which norms we follow? State government norms we follow या central government norms we follow? State government pollution control board or central pollution control board? Sir, Any I'm not confirmed, but I think that central, state and central both can be followed. Mainly in state, I think that what kind, state policy. which kind of what kind of parameter we generally measure for STP? How many type of parameter we? Not knowing, sir. BOD, COD. Yes, sir. BOD as one of the BOD, COD, CD, and CSX, coliform, co- pH value. Okay, chaliए. Now sir will take technical. Sir, Arun sir, over to you. So am I audible to you? yes, yes. Yes. Okay. So my first question to you is that you just mentioned about hypersonic missiles that they are producing this fuel for hypersonic missiles. Yes. So my question is, when do we say that a missile is hypersonic? Uh, कब कहते हैं? we can say hypersonic missile when its speed is when the match number speed is greater than 5. It, mm, मैक नंबर क्या है? आप कह रहे हैं मैक नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए. क्या है मैक नंबर? व्हाट इज मैक नंबर? I'm not able to give, so, ओके. अच्छा. आपने एक और बात करी कि मतलब जब पेट्रोलियम हम बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, तो क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है पाइप्स डिजाइन करते हैं, yes, sir. जिसमें जो क्रूड ऑयल है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लेके जाएगा. तो वो जो पाइप्स हैं वो थिन सिलेंडर्स की कैटेगरी में आती हैं. आपने शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा होगा थिन सिलेंडर का डिजाइन जो हम करते हैं. Yes, a thin cylinder. या तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थिन सिलेंडर्स पे कौन कौन से मेन स्ट्रेसेस लगते हैं जिसके लिए हमें उनका डिजाइन करना पड़ता है? So thin cylinders, and one is hoop stress, and other is longitudinal stress. ओके. तो बड़ा कौन सा होगा इनमें से? Uh, hoop stress. अच्छा. और नेचर क्या होगा इनका? कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल? Hoop stress, it is a compressive, and it is so I think that it is a compressive stress.
और लॉन्गिट्यूडनल वाला? Opportunities tensile strength. अच्छा, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कहा तो मैंने कहा कि जो पाइप्स होंगी वो थिन सिलेंडर की तरह डिजाइन की जाएंगी। थिक क्यों Yes. नहीं काम में? थिक भी तो बोल सकता था, मैं थिन क्यों बोला? क्या वो चीज है जो डिफरेंशिएट करती है थिक और Uh, थिन सिलेंडर्स को? so I am not, but I am that there is a ratio of D by T. I think that which is less than from this. It is design diameter by thickness ratio. ओके, चलिए, आपको वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर ठीक है, रेशियो हमको देखना रहेगा। ठीक है, टी बाई डी का रेशियो, हम लोग डी बाई टी का रेशियो देखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने आपने ये देखा होगा कि आजकल जो है, पहले पहले ओपीसी सीमेंट ज्यादा इस्तेमाल होता था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। Yes, sir. बट नाउ डेज जो हम लोग इवन घर बनाने में डोमेस्टिकली भी और काफी जगह पर पीपीसी सीमेंट आप लोग ज्यादा देखते हैं। It's a PPC cement. हाँ, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे पीपीसी में जो लोग ओपीसी से ज्यादा उसको प्रेफर कर रहे हैं, या सरकार उसे ज्यादा पुश कर रही है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन? So I think that PPC is more resistance to acid rain and एसिड रेन? uh, ओके। and second is PPC is also used because it is more environment friendly than OPC, because in PPC we sometimes fly ash is used, so government is more giving more priority to PPC. ओके, Hmm. इसके अलावा कोई और मतलब जो दिखता है, कोई उसकी प्रॉपर्टीज में, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में या सीमेंट की प्रॉपर्टीज में कोई ऐसा चेंज ओपीसी के मुकाबले? फ्लाई ऐश ऐड की जाती है, ठीक है, वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया है। इसके अलावा कोई और पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा So it is more durable than OPC. हो? ओके। अगर आपको मान लीजिए बहुत हाई स्ट्रेंथ चाहिए, कंक्रीट की बहुत हाई स्ट्रेंथ का आपको काम करवाना है, कोई M60, M70 या उससे बड़ा, तो आप उस टाइम कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे? ओपीसी का या बीपीसी का? So high strength के लिए सर OPC. क्यों, क्या रीजन है? जब पीपीसी ड्यूरेबल ज्यादा है, पीपीसी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ के लिए आप ओपीसी की तरफ क्यों जा रहे हैं? So in PPC, I think that the strength gains less slowly than as compared to OPC. And अच्छा, तो so अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बराबर होगी कि उसमें भी चेंज आएगा? फाइनल नहीं, स्ट्रेंथ तो बराबर अल्टीमेट होगी। ये सब सेम ही होगा. तो फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीसी ओपीसी, कोई इतना वो नहीं है। मतलब आपका सिर्फ यही पॉइंट है कि इनिशियली उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी पीपीसी की, इस करके मैं तो उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वैलिड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप जो है वो मे बी अगर आपका जो चेन्नई पेट्रोलियम कंपनी है, तो मान लीजिए आप वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपको फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या मरीन वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन में? Mine water is harmful होगा सर. Mine water is not so suitable for the construction क्या because रीजन है of कि क्यों मरीन वाटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में या और किसी प्रोसेस में? because mine water can code enforcement more as compared to normal water. So mine water is not used often. ओके। और अगर आपको करना पड़ जाए सी वाटर इस्तेमाल, तो आप कितना, क्या पैरामीटर चेक करेंगे, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये दिस वाटर कैन बी यूज?
For mine water, first we have to concrete is M30 or more than M30 should be used, and it is just severe condition. So clear cover must be about 30. Yeah, about 40, 30, I think that must be given. Clear cover, not short confirms. नहीं, ये तो आप बता रहे हो कि if you want to do construction in marine water, I'm saying कि if you want to use marine water for concrete making suppose, तो उस केस में आपको क्या चेक करना पड़ेगा पैरामीटर? अच्छा चलिए कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपने कहा आप कॉलम पे काम कर रहे हैं, कर्न ऑफ कॉलम क्या चीज होती है? KERN। Kern of column. Kern of column is that part of column in which only compressive force acts, and it is in which only compressive force and outside of kern. In the kern of the column, if any force act, then it only produces compressive stress. ओके, क्या शेप होती है कर्न की? It depends upon the shape of column. अगर सर्कुलर है कॉलम तो कर्न की क्या शेप होगी? Circular. ओके, और क्या कुछ साइज फिक्स्ड है कर्न का, या कितना भी बड़ा हो सकता है ये कर्न? Size of kern depends upon the dimensions of column. अगर कॉलम मान लीजिए D डायमीटर का है, सर्कुलर कॉलम D डायमीटर का है, तो कर्न का साइज क्या होगा? कर्न का साइज D/4 डायमीटर होगा। ओके, वेरी गुड, कर्न का ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विक्रम सर, आप पूछ लीजिए, ओवर टू यू। Yes, Vivek. Yes. So when is the interview? Sir, 22. Okay. Vijender sir, I just want to share the board. So can you allow it? Vijender sir, are you there? हाँ सर, 1 मिनट बस कर रहा हूँ। Okay, so in the meanwhile, Vivek, let me know Yes. what is the difference between RCC and PCC. In RCC, we used concrete and reinforcement, and in PCC, only concrete is used. For long span structure, generally PCC is most preferred as compared to RCC, and RCC is more economical than PCC, and for PCC mainly high technical workers are used, so it is more costly. And No, what you said, Vivek, yes, sir. PCC is used for long span structures. It is most preferable as compared to RCC, long span structures like gauges. That is kind of the pre-stress now. So yes, sir, what you have asked. So I think the screen is visible to you. Yes, yes. So I ask you, what is the difference between PCC and RCC? So sorry, sir. The PCC is plain cement concrete, and RCC is reinforced cement concrete. No? Okay, can you tell me the code? Which one code we are using? IS 456 2000. Okay.
fine. If we are saying we have to use water for making concrete or curing purposes, then what should be the pH of the water? Any idea? pH is almost 6.5 to 7 is in this range. 6.8 is also good. Okay, fine. What is the strain in steel that is defined in the LSM? What is? Strain in steel, epsilon ST. This is kind of the strain in steel. So if we talk about the limit state method, The strain in steel is 0.002 plus 0.02 plus 0.87 Fy by ES. okay, so is this is the minimum strain in steel or maximum strain in steel? So it is the minimum strain in steel for it. Okay, it means we want always strain should be there in the steel, right? No, sir. I think that it is the minimum strain steel for which yielding takes place of steel. And that I'm saying, na, we always want the strain in steel should be at least this one, or it might be more than we are Yes, sir, going but for a greater value. Yes, sir. Okay, so what is the strain in concrete in case of the bending? So its maximum strain is 0.0035. Why this maximum value of strain for concrete is defined, but if we are talking about the steel which we are using as a reinforcement, then minimum strain is defined? Why? So maximum strain in steel is not defined because in practical purpose, the maximum strain is not possible in reality. So maximum strain is not defined in this. Minimum strain in steel is defined. Whereas maximum strain in concrete is defined because after this strain the concrete breaks, and Okay. so minimum is not so as important in concrete. Okay. Vivek, why we are using steel as reinforcement in concrete? Why not other metals? Steel is used as enforcement because there are two reasons. First is it is not it is cheaper than other metals, and the second is its temperature mm, coefficient of thermal expansion is nearly equal to the concrete, so it is more preferred as steel as enforcement. Okay, fine. What is the maximum free fall height of concrete? Free fall height of Concrete? so 150 centimeter. 150 centimeter. Okay. 150. Yeah. Okay, fine. So I'm just drawing this curve for concrete. So this is kind of the stress strain diagram. You must gone through this curve many a times. So it is like this one. This parabolic part. Yes. Let me just draw it again. This parabola. After that, what we have? This straight. Is it okay? Yes. Now, what is the strain corresponding to appearance of first crack in the structure? So I think that my video is coming, so can I not sing all the yes, okay. Yes. So first it is the 0.002. Okay. And this value, this stress value is what? This one, this black, which I'm just making here by dotted. It is the 1 minute, sir. So 0.45 FCK. 0.45 FCK. So it is always true we are getting the same curve what I draw here, or it might be different. What do you think?
It might be different. It depends upon us to how we will draw the curve. It is not fixed. Okay, fine. Can you tell me what is the characteristic load? So characteristics load. So repeat that question. Characteristic load. What is the characteristic load? So characteristics load is that load that in which that 95% of the load that will lower than that limit. It means that 95% of load is lower. And Okay. Now you must heard about super elevation and camber. Super elevation and camber. So what is the similarity between these two? one similarity is that they can be both can be used as for the water living and one thing is that they can form like it's a slope. mm, Okay. What is the minimum value of super elevation? it is 7% for the plain land. 7%. Is it minimum or maximum? Vivek. So it is maximum. So it's, minimum. So not able to record. Okay, fine. I'm just giving you a condition. Suppose this is a curve that we have, and this width of the carriageway is 10 meter, and the rise of the outer edge with respect to the inner one, this is 40 centimeter. Okay, so let me draw it again. This thing is like this one. This is the actual scenario of the surface. So can you tell me what is the super elevation that we have here? Is 40 centimeter. This overall is 10 meter. This is 10 meter. So can you tell me what is super elevation? So tan inverse 4. It is 4. So if tan inverse 4, sir. Tan inverse. Okay, my last question to you. What is bitumen? Bitumen is the material which is formed from the fractional distillation of the crude oil, and it is used for the wood. It is used for wood for making of the wood. Fractional distillation क्या होता है? Vivek. In fractional distillation, we we heat the crude oil into with a different temperature, so that each fractions of crude oil is separated into different parts. In fractional distillation, mainly we heat crude oil up to a different temperature into a temperature different temperature, so that it is separated into different components. Okay. And how will you check the purity of So purity of bitumen. yes, purity of bitumen. I think that viscosity gradient is used. VG. Viscosity gradient. Purity of it. Not so confirmed. Okay.
So I think Vivek, right now we can provide feedback to you. Yes. So what I ask you, starting from the last, so super elevation and camber. So first of all, just define it. What is super elevation? ठीक है, आपको डिफाइन करना है इसको सबसे पहले तो। Yes, yes. कैम्बर क्या होता है इसको भी डिफाइन करना है। तो मैंने आपसे सिमिलरिटी पूछा, व्हाट आई आस्क यू विवेक, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सुपर एलिवेशन and camber? The simple answer that you have to report first, both are the cross slope or transverse slope that is being provided to the road surface. Camber is on the straight part and super elevation is on the curve. मतलब जब हम रोड के आउटर एज को उठाए होते हैं रिस्पेक्ट टू इनर वन, दैट इज सुपर एलिवेशन जो कर्व पे होगा, और जब रोड का सेंट्रल पार्ट उठा होता है रिस्पेक्ट टू द एजेस जो हमारा स्ट्रेट पार्ट पे होता है, दैट इज कैम्बर, Yes, straight part. है ना। तो कर्व पे अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द मिनिमम सुपर एलिवेशन, दैट इज कैम्बर इटसेल्फ, Yes, minimum है ना। तो मैंने आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी कि मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होती है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया था इधर विवेक, यहाँ पे आप tan थीटा निकालो उसका। tan थीटा क्या होता है? स्लोप, और यही Yes, sir. सुपर एलिवेशन है। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है 40 सेंटीमीटर और जो कैरिज वे की विड्थ है वो है 10 मीटर, तो मतलब ये 0.4/10 हो जाएगा। अगर ऊपर भी आप मीटर में कर लो तो ये आपके पास 1/25 बन जाएगा। जो सुपर एलिवेशन आपको मिल रहा है वो 0.04 बोले मतलब क्या हो गया आपका 1/25 हो गया क्या? Yes, That's yes. it. तो ठीक है। Fine. So what I ask you कि अगर आपको बिटुमेन की प्योरिटी चेक करनी है तो कैसे करोगे? सिंपल आंसर रिपोर्ट करो, सर हमारे पास प्योरिटी चेक करने के लिए कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और बेंजीन भी है, जिनमें बिटुमेन पूरी तरह से घुल जाता है अगर वो प्योर होगा तो प्योरिटी चेक करने के लिए हम ये सॉल्युबिलिटी वाला टेस्ट करते हैं। और ये मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में जानते नहीं था। मैंने आपको सुबह बोला था कि आप बिटुमेन जो है ना उसके ऊपर थोड़ा आप देख लो, ये सब देखा नहीं पाया इसको। है ना। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको उसके बाय प्रोडक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सब बिटुमेन, हाँ, वेस्ट। तो मैंने आपसे पीसीसी और आरसीसी के बीच में एक बिल्कुल बेसिक सा अंतर पूछा था, लेकिन आपने कुछ और ही यहाँ पे आंसर देना नहीं, शुरू वो कर दिया मैंने पीसीसी के लिए। वो समझा, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट सब मैंने। और अभी मैंने इससे क्वेश्चन कुछ और ही पूछना था आपसे, लेकिन फिर वो मेरा क्वेश्चन ही स्किप हो गया, क्योंकि मुझे आपका आंसर बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये या ये सब मैं आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं, इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, है ना। तो पीएच जाता वो यूज सुना था, इसलिए मैंने गलती हो गई। आपने पीएच बोला कितना? 6.5 से लेके 7। इज इट रिटन एनीवेयर इन द आईएस कोड? Notes, no, sir. Yes, no, big no. Then how can you say that this is the pH? Many exams, they are generally written approximately to 6. So I have Which one? IS? 456. No, just open again code, dear. You will find the pH of water should not be less than 6. Code is Yes, saying sir. it should not be less than 6. मतलब acidic water you will not allow. Or basic is not. If the pH is less than 7, so what it means? Acidic we have. है कि नहीं? Yes, sir. Acidic in nature होगा, so we can't use that one. So strain in steel in LSM, that was fine. Okay, the value you told to me. So why this minimum value of strain that we require, this should be there, and in case of concrete we are just going with the maximum value? The answer that you told, it was correct, but not the streamline. सुबह में मैंने आपको बोला था ना, बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन वे में थोड़ा सिंपल आपने आंसर रिपोर्ट करना है। तो आपको ये बोलना है सर, स्टील being a ductile material and what we having the ultimate stress for steel, whatever the grade we have, Fe250, Fe415, Fe500, Fe550, Fe600, that is a recent development in the market with capital D at the end, that is stand for the ductility. So if we are going with the maximum value of the strain, so to achieving that one, we have to apply a large force on the steel. That is impossible in the practical. Yes, sir. We can't apply on the civil structures that amount of the load. So that's why we are going with the minimum value of the strain for steel. And on its contrary, for the concrete, we are going with the maximum value. The reason that concrete is a brittle material. Brittle material, so it will not give you enough or proper warning before the failure. So you must heard about like this under info section, balance section that we have.
or even sometimes the section is going to be over info, then we are just computing it with the balance section, and what we are doing, we are providing the extra steel in the compression zone also. These are double info sections. फाइन, ठीक है। देखो विवेक, टेक्निकली में आप इतना कोई वीक नहीं हो, है ना, बस थोड़ा सा आपने जो आंसर करने हैं वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने हैं। तो वो उसके लिए और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया। यस यस, प्रैक्टिस, वो नहीं हो पाया, तो उसको ध्यान बार बार कुछ करो। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, है ना। यस यस, ओवर टू यू विजेंद्र सर एंड हारून सर। ओके सर। विवेक, लेट मी गिव यू फीडबैक। तो मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछे थे, काफी क्वेश्चन आपने आंसर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो आप जिसमें या तो अटके हैं या आपने स्ट्रीमलाइन आंसर नहीं दिया, जैसे विक्रम सर ने भी कहा। आई थिंक हाँ, थोड़ा क्या है ना कि बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उस कंसाइज आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। और मतलब हाँ, गेस वर्क नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, रिलेटेड टू दैट होना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने आपसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में पूछा था, आपने बोला मैक नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए, बट फिर आप मैक नंबर का मतलब ही नहीं बता पाए। तो थोड़ा मुझे उसमें डिसअपॉइंटिंग लगा। बेसिकली मैक नंबर का सही है कि नहीं सर, मैक नंबर 5 से ग्रेटर नहीं, वो ठीक है, वो आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 5 हाइपरसोनिक कैटेगरी में आ गया, दैट इज कूल। बट द थिंग इज कि मैक नंबर का मतलब भी तो पता होना चाहिए। अगर आपने मैक नंबर बोला था तो मतलब भी तो पता होना चाहिए उसका। सर मैक नंबर V/C होता है सर, वो क्या, वो मुझे याद, वो तो नहीं होता है कि मैं कंफर्म नहीं था इसलिए। V/C होता है where C stands for the velocity of sound in that particular medium and velocity of our object in that particular medium. मुझे याद था, लेकिन मैं डाउट में था, इसलिए सोचा कि कहीं गलती हो जाए, इसलिए। आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब कि मतलब मिसाइल्स को हाइपरसोनिक बोल रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है तो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में चली जाएंगी वो, अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से भी 5-6 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो। ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया था थिन सिलेंडर वाला, जो मैंने आपको कहा था कि उसका डिजाइन करेंगे, तो आपने ठीक बता दिया कि उसको पाइप्स को थिन सिलेंडर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, थिक क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। इसके अलावा जो आपने हूप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडनल बताया था, तो दोनों ही जो हूप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस है वो टेंसाइल नेचर के होते हैं। वो एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल नहीं है, दोनों ही टेंसाइल नेचर के, ठीक है। और यस, ओके, ठीक है। और दूसरा फिर हमने आपसे बात करी थी पीपीसी के बारे में। पीपीसी एक बहुत ही जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए, मटेरियल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एक एडवांटेज आपने यही बताया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है या कॉस्ट फ्रेंडली है, बिकॉज इसमें एक ऐसा मटेरियल डला हुआ है जो वेस्ट है या एनवायरमेंटल हैजर्ड है। तो इसके अलावा इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि ऐसे वाला जो कंक्रीट होता है वो उसमें क्रैक्स कम आते हैं, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलती है इसकी। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ, तो इसमें क्रैक्स जो है वो कंपैरेटिवली कम आएंगे बिकॉज ऑफ दैट। अगर एक्सपेंशन होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर निकलती है तो उसकी वजह से जो क्रैक्स आते थे जैसे मास कंस्ट्रक्शन के वर्क में, वो थोड़े कंपैरेटिवली कम आएंगे। ड्यूरेबल होता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा, ये ठीक था आपका पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात करी थी कि और ये इसका जो परमेबिलिटी है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है। तो जो पानी वाले स्ट्रक्चर में अगर हमको कहीं बनाना पड़ जाए इसे, जैसे कनाल की लाइनिंग जो है वो पीपीसी से ज्यादा अच्छी बनती है अदर देन ओपीसी, क्योंकि उसमें जो है वाटर का सीपेज कंपैरेटिवली कम होगा, ना वो परमेबिलिटी उसकी कम रहती है। इसके अलावा फिर मैंने आपसे पूछा था मरीन वाटर के कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो मरीन वाटर का कंस्ट्रक्शन आप इसलिए नहीं करते उसको कंस्ट्रक्शन में यूज, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोरोजन करेगा, या इसके अलावा जो है ई फ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम भी रहता है। ई फ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम भी उसकी वजह से रहता है, और यही चीज हमें चेक करनी रहती है। अगर हमें कभी मरीन वाटर इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो पहली बात तो इसके लिए आरसीसी के लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीपीसी इसके लिए पीसीसी के लिए किया जा सकता है इन 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 उस केसेस में जब के पास आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसमें भी बस आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि जो कोरोजन हो रहा है वो सॉल्ट की वजह से ही हो रहा है, या जो इफ्लोरेसेंस हो रहा है वो सॉल्ट की वजह से ही हो रहा है। तो आपको बस ये चेक करना है कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, फ्लोराइड आइंस बहुत ज्यादा ना हो, ये आपको चेक करना है। इसका ये लिमिट भी पूछ सकते हैं कि मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना
आई ज्यादा थिंक नहीं ये होना चाहिए। जो क्लोराइड है उसका लिमिट 2000 ppm है, हाँ 2000 और mg। ओवर हाँ और हम्म। ओवरऑल 3000 ppm है शायद, कि ओवरऑल जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो 3000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्लोराइड की 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके IS 456 में भी लिखा हुआ है। Yes. इसके अलावा कर्न ऑफ कॉलम आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था, वो अच्छा था आपका। आई थिंक यही हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सर मोस्टली। एक क्वेश्चन वो पूछे थे आपने सर, कि क्या? अगर M60 से के लिए अच्छा अच्छा, ओपीसी या पीपीसी ठीक है। उसका। उसका ये था कि जो जो पीपीसी सीमेंट है ना, वो Yes, sir. ओपीसी 33 ग्रेड के जैसा है। ओपीसी 33 ग्रेड का जो सीमेंट आता है उसी में ही फ्लाई ऐश ऐड करके पीपीसी बनता है। तो पीपीसी के और ज्यादा ग्रेड नहीं आते, जबकि ओपीसी के 53 तक आता है। Yes, sir. तो जितना उसमें जो है वो ग्रेड जितना ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आ सकती है Yes, उस sir. सीमेंट हाँ। को यूज करके। तो पीपीसी में इस पॉसिबिलिटी नहीं है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने की। इसके लिए फिर अगर आप देखोगे कि जो फ्लाईओवर का काम है या कुछ ऐसे गवर्नमेंट के काम चलते हैं बड़े बड़े, उसमें आपको यूजुअली ओपीसी के सीमेंट ही दिखेगा। Yes, लेकिन sir. ओपीसी में डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक जो वर्क रहता है उसमें सरकार इस चीज को पुश करती है कि ज्यादा लोग पीपीसी ले, क्योंकि घर का एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा है कि पीपीसी का अगर डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा वो हो जाएगा तो जो है वो हमारा फ्लाई ऐश एक वेस्ट मटेरियल जो है, जो एक हैजर्ड मटेरियल है, वो यूज हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट वहां जरूर पुश करती है, लेकिन जहाँ हैवी स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे फिर वो ओपीसी ही उनके पास ऑप्शन होता है, तो ओपीसी के साथ जाते हैं या और कोई सीमेंट के साथ जाएंगे। ठीक है, तो बेस मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि एक तो कॉन्फिडेंटली आंसर करिए। आपको पता है चीजें काफी ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कई बारी। और यस सर दूसरा है वो। कि हाँ, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी विद प्रैक्टिस आएगा। और जैसे कि विक्रम सर ने सजेस्ट किया, थोड़ा स्ट्रीमलाइन आंसर दीजिए, भटकिए मत अपने उससे। तो सर ठीक। स्ट्रीमलाइन के लिए मैं मतलब खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हाँ टाइम तो देखिए, कम ही है। कॉन्फिडेंस आ जाए, एक तो पहले आपको आंसर पता होगा, यस कॉन्फिडेंस आ सर। जाएगा। फिर जो की पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे कीवर्ड्स क्या बोलने हैं, उसी के इर्द गिर्द अपना वो रखिए कि ये वर्ड आ जाना चाहिए। लेकिन आपको ड्यूरेबिलिटी बोलना है तो फिर ड्यूरेबिलिटी के इर्द गिर्द बोलना है, या आपको स्ट्रेंथ का वो बोलना है कि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ आपका कीवर्ड हो गया, फिर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है आपने, और यहाँ वहां मत जाइए। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो यस सर। विवेक, यस सर। यस देखो एक तो ये वेबसाइट पे जरूर जाके देख लो उनके प्रोडक्ट क्या है। नैप्था के बारे में भी देख लेना, लाइटर में नैप्था का यूज किया जाता है। ठीक है, जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे। ठीक है, सर लाइटर में सर कौन सा ऑयल यूज होता है सर? ऑयल नहीं, नैप्था यूज होता है। सर नैप था, सॉरी। ठीक है, यस सर। और क्या बोलते हैं दूसरा, जो एसटीपी, ठीक है ना, एसटीपी के तो बेसिकली पता होना चाहिए क्या होता है एसटीपी। ठीक है, एसटीपी के कौन हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या पैरामीटर को वो करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, बीओडी सीओडी इन्हीं के लिए तो करते हैं, टीएसएस, ठीक है ना, कॉलीफॉर्म, ठीक है, क्लोरीन, ये सब इसी के लिए तो ट्रीट करते हैं। ठीक है, और स्टेट के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, जिस स्टेट में हम डिस्चार्ज करते हैं उसके नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। स्टेट का सर। ठीक है, वैसे आपका इंट्रोडक्शन आज ठीक था, और आपने वो आंसर भी अच्छे दिख से दिया कि मैंने जो पूछा था, बीइंग ए सिविल इंजीनियर। ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी? ये कोर डिपार्टमेंट नहीं है, आपने जो इसके बारे में बोला था, ठीक है ना, सीपीसीएल के बारे में, यस वो आपने ठीक बताया। वैसे मेन तो टेक्निकल होता है, जो थोड़ा थोड़ा इसमें जनरल चीजें, ओपेक कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, यस ओपेक। यस ओपेक। और इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए, और क्या बोलते हैं अपना, उसकी यूनिट क्या होती है अपना, सेम जो क्रूड ऑयल, जो रिफाइनरी की कैपेसिटी एमएमटी में डिफाइन करते हैं ना, यस सर। तो एमएमटी मिल। को रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, सर ओपेक प्लस ये सब हमें डीप में जाना जरूरी नहीं है ना कि सर मतलब ऊपर ऊपर सिर्फ जाना चाहिए ओपेक।
हाँ बस ओपेक क्या होता है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं इसमें, यस ठीक। सर। हाँ बस उसके बारे में जानना है थोड़ा थोड़ा, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो जनरली क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। यस गुड। ठीक है सर, ठीक सर। चलो वैसे ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, इंटरेक्शन भी ठीक हो रहा है आपका। आंसर को थोड़ा कंसाइज करिए बस, और कुछ नहीं है जो सर यस ने बताया। मैं काम करता हूँ इस पे याद। चलो वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम इसी लाइन में रहो, ठीक है ना, सब ठीक है। ठीक। चलो थैंक यू गुड सर। लक, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक्स।